me, Asha Seth. Um, I am somewhere out in uh, you know something called as Roka ceremony of a dear family member, and so I'm doing the live from there because I couldn't make it at home before the call started. So yes, I thought, what could it be different? Different place, different way of doing life, and a different energy. So, different is what I'm going to talk about. As you know, I am a wellness consciousness coach, money coach, an author, and a lot of other things. So, what difference can you be? कभी ये सवाल किया अपने आप से? आप वो क्या अंतर बन सकते हैं? आप वो क्या अलग हैं? सब सब अलग हैं. Everybody is different from the another one. Do you realize that? बस जब तक आप उसका एहसास नहीं करते हैं, आप उस डिफरेंस को अपने लिए यूज नहीं कर पाते हैं. So you know you are different, you think different, you do things differently, you operate in a very different manner in your life, but you're not able to acknowledge the difference you are. आप भिन्न हैं, बहुत अलग हैं दूसरों से, पर अगर आप इस चीज को स्वीकार लें तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. बहुत सारे लोग स्वीकारते नहीं है. दे डू नॉट एक्नॉलेज द डिफरेंस दैट दे बी. सो देन यू नो व्हाट दे आर डूइंग. दे ऑलवेज वांट टू फिट इन, ऑलवेज वांट टू फिट इन. एंड एक लड़ाई चल रही होती है खुद के साथ एक संघर्ष चल रहा होता है. मैं बाकी सबके जैसा क्यों नहीं हूं? एक्चुअली you don't like being like others. You are very different in your nature. You're very different the way you live your life. Your choices are very different. Your decision making is very different. So everything is different. And yet you make it very difficult for you. You make it difficult for you because you find yourself very different from the rest of the people in the crowd. But do you realize that your difference is your signature mark? That is your special thing. That is the special thing about you. Until the time you acknowledge that, until the time you recognize and realize that yes, you are different, until the time you accept that, you will not have that energy of difference available to you to your advantage. So then what you go on doing is you keep fighting yourself. Subconsciously, you know you're very different. And then there is a constant struggle going on to fit in. So it's a contradiction that you are living in. It's a conflictual universe that you are living in. You actually don't like to fit in. You don't like to do things that others do. Like, for example, I'm going to say I came for this, like I said, Roka ceremony, which is generally done before the wedding ceremony, a few months or maybe a year before the. It's a kind of a booking ceremony, where two people just kind of book each other. Okay, so here we stop looking around and we go ahead now. So that ceremony is called Roka ceremony, and uh, I was observing a lot of people had their own thing about the ceremony. ये क्यों, why people do this, इससे क्या होता है, why people marry in the first place. Somebody had that thought. So yes, marriage is a choice, and then everything else also is a choice. In this reality, you have been told that marriage is a compulsion. It is something that you do on an auto mode. You have you finished your studies, you're settled now, you're working, you're drawing good income. What next? So this becomes the obvious next step. This becomes the obvious next step for the people around you, especially the family.
सो फैमिली, आपने सुना ही होगा, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा तो सब कुछ हो गया है, अब जॉब हो गया है, सब कुछ हो गया, अच्छा कमा रहे हो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ. People have this thing of settling down associated with marriage. Tell me, are you unsettled until the time you're married? You are never unsettled. So until the time you are married, you choose to get married, people always say settle down ho jao, settle down ho jao. What is the definition of settle down ho jao? मुझे आज तक समझ नहीं आया. You are not unsettled. That doing something or marrying somebody will actually make you settle down. This applies for both men and women. अगर आप सवाल करें, if you just question कि अब मैं क्या करना चाहूंगा या क्या करना चाहूंगी, you will get clarity. Okay, what next? What next would I like to do? That it would be exciting for me. That it would be fun for me. That it would create even a bigger world for me. ऐसा मैं क्या अब कर सकता हूं, इसके बाद जो मैंने करना था उसके बाद अब मैं और आगे क्या कर सकता हूं कि एक बिल्कुल अलग तरह का जीवन में जीऊं, जिसमें मुझे भरपूर आनंद आए, जिसमें मुझे मजा आए. ये सवाल आप नहीं करते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आप आगे और क्या करना चाहते हो. So जब आपको पता नहीं चलता, out of that confusion, probably you are in that confused state. And then people add on to that confusion. अच्छा सब कुछ तो कर लिया है, तो अब शादी कर लो. That's not a choice. It is a conclusion. तो आपको चॉइस मतलब जब आपको ये कर सकता हूं मैं, वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, जब आपके पास 4-5 अलग अलग चॉइसेस हो, तब आप उसमें से एक दो चूज करेंगे. अच्छा ओके फाइन, लेट मी डू. हियर देयर इज नो चॉइस. हियर इट इज जस्ट, it is a obvious thing which everybody does, so you have to do it too. Now that is something which is not really palatable to a lot of people, and so lot of people have a very different take and opinion about marriage today. And by no means getting married means settling down. You are never unsettled to settle down, and in order to settle down you have to get married. प्लीज गेट दैट. सो जहां से भी आपने ये उठाया है, जिसने भी आपके अंदर ये धारणा, ये विचार डाला है कि शादी करना ही सेटलिंग डाउन होता है, क्या आप उसको अब छोड़ना चाहेंगे, रिलीज करना चाहेंगे? वुड यू जस्ट लेट गो ऑफ दिस थॉट, दिस ओपिनियन? कैन यू जस्ट रिटर्न इट टू द सेंटर विद ऑल कॉन्शियसनेस अटैच नाउ? जिसने आपको ये दिया है, बस उसको पूरी सजगता के साथ ये धारणा, ये विचार लौटा दीजिए. It's as simple as that. This is the first rule of today. That वो लोग जो आपको बोलते हैं कि अब सब कुछ कर लिया है, जॉब हो गया है, पहले पढ़ाई हो गई, फिर जॉब हो गया, अब तुम अच्छी जॉब में अच्छा कमा रहे हो या कमा रही हो, चलो अब शादी करो. चलो अब शादी करो इज नॉट अ क्वेश्चन. चलो अब शादी करो सवाल नहीं है, वो एक निर्धारित करा हुआ फैसला है. जब आप किसी निर्धारित करे हुए फैसले के ऊपर अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं, तो आगे जाकर आपको लगता है नहीं यार, मैं कुछ और कर लेता, मैंने शायद बहुत जल्दबाजी कर ली, मैं शायद कुछ और कर लेती, और मुझे शादी तो करना ही नहीं था. तब आपको एहसास होता है कि आप दूसरों की बातों में आ गए. सो अगर आप दूसरों की बातों में नहीं, मैरिज सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो अगर आप ऐसी ऑब्वियस चॉइस ना बनाना चाहें और एक्चुअली पूरी अवेयरनेस के साथ कुछ चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सवाल करिए. मैं हर बार बोलती हूँ कॉल्स में, सवाल ही वो जरिया है जो आपके जीवन के दरवाजे खोलेगा आपके लिए. क्वेश्चन इज द वे to open the doorways of multiple possibilities in your life that you would like to choose, that you would actually like to go ahead with. So if you don't question, you will live your life by obvious choices that others are making for you. It's not even your choice.
जब आप अपने लिए चुनाव नहीं करेंगे, दूसरे आपके जीवन के चुनाव आपके लिए करेंगे. Get that very clear. When you don't choose for you what you would like to do, what you would like to be in your life, others will choose for you. और क्या जब दूसरे आपके जीवन के चुनाव कर रहे हैं, क्या मजा आएगा आपको अपना जीवन जीने में? शायद नहीं, क्योंकि वो आपका चुनाव ही नहीं है. इसलिए get present to what you are choosing in your life, and actually ask yourself a question: on what basis am I making this choice? So again, if I just continue with this marriage example, even if you choose to get married, do ask, is it my choice or am I choosing based on others' choices? For, like I said, it's an obvious choice. Marriage is an obvious choice, is something that you have been told by this reality, by the people in this, in your environment. ये तो करना ही पड़ता है. करना ही पड़ता है is a compulsion. There is no compulsion for anything in life. So get very present. What would you like to choose so that you never have any regrets in the future? Nothing is good or bad. Nothing is right and wrong. Like I've always said, everything is just a choice. So before you get into right and wrong, before you get into the good and bad, get one more thing very clear. There are nothing called as right choices. सही चुनाव जैसी कोई चीज नहीं होती है. चुनाव सिर्फ चुनाव होता है. उसमें सही और गलत आप लगाते हैं और आप अपने ही कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंफ्यूजन लाइफ में ना बढ़े, जस्ट चूज. जब आप सही चुनाव के पीछे भागेंगे तो आप वही करेंगे जो 99% लोग कर रहे हैं. इसके बजाय जो सवाल आप कर सकते हैं वो शायद ये हो सकता है, मैं ऐसा कौन सा चुनाव करूं जो मेरे लिए मेरे जीवन में काम करेगा? That's a wonderful question. What can I choose in my life that would actually work for me in my life? When you ask that question, then something which will actually work for you will show up for you. And something that will work for you is not necessary will work for other 99% people. No, maybe not. तो जो आपके लिए काम करेगा वो जरूरी नहीं है वो दूसरों के लिए काम करे. जो दूसरों के लिए काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है वो आपके लिए काम करे. इसलिए एक ऑब्वियस चॉइस में जाने के पहले सवाल करिए. Just because maximum number of people choosing something to do doesn't mean you have to do it too. What difference can you be in your choices that you create a different world and different life and different reality for you? ऐसा क्या भिन्न आप चुनाव कर सकते हैं, भिन्न चुनाव कर सकते हैं, अलग सा चुनाव कर सकते हैं कि आपकी लाइफ वैसी हो जैसी आप चाहते हैं. इसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना आप कैसी लाइफ चाहते हैं. सो एक सवाल और अपने आप से करिए, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं या चाहती हूं. What life would I like to live? What kind of life would be exciting for me? कि जीवन जीने का मजा आए. सवाल करिए और अपने जीवन के दरवाजे खोलिए. यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ, सवाल करिए और अपनी किस्मत के दरवाजे खोलिए, क्योंकि किस्मत की चाबी आपके पास है. तो अगर आप अपनी चाबी लगाकर अपनी किस्मत के दरवाजे नहीं खोलेंगे तो लोग अपनी चाबी लगाएंगे और आपके दरवाजे खोलेंगे जो शायद आपको पसंद ना आए. This is what consciousness calls are all about, where I actually bring in those little nuggets of consciousness which can actually make a difference in your life. These may sound like a small thing, but has a big impact on your future. This is where you begin to create your future in the present. So one more thing that I want to bring to your awareness is, do not make your present decisions
based on something that has occurred in the past. Okay? Because if you make certain decisions or particular decisions based on the choices that you made in the past, based on something that showed up in the past, the future will also look like your past. That is the difference. और फिर आप बोलेंगे, देखा मैंने कहा था ना, मैं ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है और अब ये वापस हो रहा है. हो कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ आपका क्रिएशन है. इसलिए ये बात जान लीजिए और मान लीजिए कि जो भी आपका जीवन आज की तारीख में दिख रहा है, ये आपका सृजन है. आप इसके सृजन करता है. Whatever your life looks like today, here, right now, is actually the byproduct, is actually the creation of the choices that you have made in the past. So just in case you're not happy with your life today, the way it looks, do not begrudge your life. Do not have complaints about your life, but make a different choice. अगर आपको आपका जीवन वर्तमान में जो दिख रहा है वो पसंद अगर नहीं आ रहा है कि नहीं, मैंने तो ऐसा जीवन नहीं मांगा था, मैंने तो जीवन से बहुत सारी दूसरी आशाएं थी, दूसरी महत्वाकांक्षाएं थी, सो शिकायत मत करिए. सबसे पहले शिकायत करना बंद करिए और फिर ये सवाल करिए, अब मैं ऐसे क्या चुनाव कर सकता हूं या कर सकती हूं कि जिस तरह का जीवन मैं चाहती हूं वो मेरे पास आए, वो मेरा जीवन बन जाए. The go-to question would be, what choices can I make now, today, that would allow me to create and live the life that I desire? Okay? But उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले you take the complete accountability and responsibility of the life that you are living right now, in this moment. इस समय, इस क्षण में अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना जरूरी है, चाहे वो जैसा भी दिख रहा हो. इससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आप ही सृजन करता है, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. द क्रिएटर इज नॉट समवेयर आउटसाइड. ओके, सो इफ यू वांट योर लाइफ, फर्स्ट टेक, इफ यू वांट योर लाइफ टू be how you desire it, take that accountability, take that responsibility, and then start making the choices that will actually allow you to create the life that you want to live. And उसकी चाबी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ. चाबी है सवाल करना, सवाल करना, सवाल करना. क्या करता है सवाल करना? एक्चुअली क्या करता है सवाल? वो सारे जो पहले से निर्धारित करे हुए निष्कर्ष हैं, उन सबको हटा देता है, उन सबकी ऊर्जा को मिटा देता है. When you question all of those pre-decided conclusions that are already resting in your subconscious mind are eliminated and eradicated. सवाल की प्रक्रिया में ही इतनी ताकत है कि वो सारे जो बाधक आते हैं, जो हमारे खुद के ही आते हैं, विचार, जो सबसे बड़ा बाधक है, थॉट्स. बाधक इन द सेंस विचार. व्हेन आई से विचार बाधक है, मतलब वो विचार जो आप जिनको देख नहीं पा रहे, जिनकी आपको अवेयरनेस भी नहीं है, जिनके प्रति आप सजग नहीं है. सो आपके खुद के बैरियर्स आपके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस बनते हैं. अगर इन बैरियर्स को हटाना है, इनसे लड़ना बंद करिए. डोंट फाइट देम बिकॉज दे विल कम बैक अगेन. दे एक्चुअली डोंट गो एनीवेयर, बट यू विल एग्जॉस्ट योरसेल्फ फाइटिंग. सो सवाल करने के लिए, सवाल अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए, अपने हिसाब से उसका निर्माण करने के लिए सवाल करें. और जो आज आपका जीवन दिख रहा है, उससे लड़ाई बंद करने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले कि आज जैसा भी मेरा जीवन दिख रहा है, ये मैंने ही सृजन किया है, मैं ही इसका या मैं ही इसकी सृजन करता हूं. 50% of your job would be done to take that responsibility. Taking responsibility
taking accountability of everything that you see in your life is a big step. And do you know, most people don't want to take that responsibility. Most people don't want to take that accountability. What they rather do is blame someone outside. मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से है, मेरी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है. एंड गेस व्हाट, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता है, क्योंकि सारा ब्लेम बाहर डाला जा रहा है. किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था, अगर आप ध्यान दें, पर हाँ, आप मजबूर हो गए थे दूसरों की बातों में आके. पर बातों में तो आप ही आए थे ना. अगर आप सवाल कर लेते तो शायद आप दूसरों की बातों में नहीं आते और अपने चुनाव खुद करते. So with this, I am gonna sign. I am taking your leave about 7 minutes early today, and I'll see you next Sunday. And if there is anything that you would like me to talk about, that you would like to hear from me, please put it in the comments, or on the Insta, or you can message us, the Chispaarsh team, and I will bring that topic on the next call and I will talk about it. And I would love to have your questions on it. क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर, जो भी आपका टॉपिक है, उस पे आप जो भी क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि स्पष्टता आ जाए, सारा कंफ्यूजन चला जाए, वो आपको तभी मिलेगा जब आप सवाल करेंगे. तब मैं आपको वो क्लैरिटी आपके लिए ला सकती. All right? Thank you so much. Thank you for being here every Sunday 9:30 p.m. And if by any chance you have missed being here and you're going to be watching it later, the recording would be uploaded on Insta, on YouTube, and on other platforms. Okay? Thank you so much again for being here. Have a wonderful Sunday evening and have a brilliant start of your new week, of your Monday from tomorrow. Have a bright, beautiful start of a new week from tomorrow. So happy Monday. Bye-bye.